आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मजीद समाअत आज होगी। दलाइल के दौरान बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस ने साथ ही जजेस को टोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात को रोक कर रखें। 4 समातों के बावजूद ये केस ख़त्म नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे बार बार टोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं एक जज हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। I think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. And I would request the honourable members of the bench to at least let counsel complete his submission. Yes, there will be questions, but let us. I don't know what you're going to say next. Okay, that's your argument, but you say that law. I don't know what you say. I still have to note it. Can you please complete your thought? So let me understand what you're saying. So then the question, I will understand the question also. Maybe I'm not so quick at understanding. Can you please complete your submissions from your own mouth? Let us hear it. My submission is that the word. Let me first ask up to whatever you said. Please, now. can you? I don't know. The question has to follow a submission. Please, can you conclude your submission, Mr. Faez Siddiqui? Otherwise, we'll have to spend forever on this case. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।